गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणकम एंड जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं एंड वी गोइंग टू टेक अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ इंडियाज कैपेबिलिटीज। व्हेन आई से कैपेबिलिटीज, इट इज एन ऑलराउंड कैपेबिलिटी। और इस रिव्यू के लिए विद मी इज लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज चानन। अ, आज मेरे लिए बहुत ही एक खुशी का मौका है कि मैं गनर शॉट के ऊपर जनरल शंकर के साथ एक डिस्कशन में हूँ। इस डिस्कशन के दौरान आज रोल थोड़ा रिवर्सल हुआ है क्योंकि जनरल शंकर को मैं कुछ सवाल पूछूंगा। जनरल शंकर इन्होंने कई वेबिनार, कई आर्टिकल्स और एक चाइना स्पेसिफिक जो वेबिनार तकरीबन ऑन अ डेली बेसिस आता है, वो काफी कुछ बतलाता है हमें कि जो हमारे जो मेन दुश्मन है हमारे नदर्न बॉर्डर के ऊपर, उनकी क्या कमियां हैं। और वो हमारे देश के साथ कई आंकड़े लगाना चाहता है एलएसी के ऊपर, साउथ चाइना सी में, पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में। पर आज का जो मुद्दा है हमारा, वो हाल ही में हमने अभी एक G20 समिट कंप्लीट किया और उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हमने ब्राजील को हैंड ओवर की। इस प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया का जो एक ग्लोबल राइज हुआ है, वो एक देखने लायक और एक सराहनीय बात है कि इंडिया जो अब तक एक माइनर या एक सबड्यूड देश माना जाता था, वो कई देशों के बीच में कंपटीशन में था। नेटो था, वॉरसो था, अभी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर चाइना और यूएस है। बट इस G20 के दौरान इंडिया ने बहुत कुछ एक सफलता दिखाई। और वो सफलता ये थी कि पहली बात तो दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, जबकि सब मान के ये चलते थे कि दिल्ली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा। दूसरा, अफ्रीकन यूनियन को एक नेक्स्ट मेंबर एडमिट कराया एज 21st मेंबर ऑफ G20, नो प्रोबेबली जिसको G21 बोला जाएगा शायद अब से। नेक्स्ट मेजर पॉइंट था कि हमारा जो इमसेक कॉरिडोर के ऊपर अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें के सारों के सभी देशों ने उसके अंदर हमारी सहायता की है, और चाइना तक ने इसके ऊपर टिप्पणी दी कि वो इस बात से बहुत खुश है और वो इसको एक कंपटीशन नहीं मानते। लास्टली, इंडिया का अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए तकरीबन सभी देश चाहते हैं कि इंडिया को एक मेंबर बनाया जाए। अब इंडिया जो है वो इस एक कस्प मोमेंट के ऊपर है, जबकि उसने इस मोमेंट को, या जैसे हम फौज में कहते हैं, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना चाहिए, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और अपनी जो काबिलियत है विश्व के सभी देशों के बीच में एक काबिलियत बनानी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं जनरल शंकर से एक टिप्पणी मांगूंगा कि वो क्या समझते हैं कि विश्व के अंदर हमें अपना एक बोलबाला बनाने के लिए, और 2047 तक जब हमारे 100 साल हो जाएंगे आजादी को, हम चाहते हैं कि इंडिया जो है एक सुपर पावर बने। तो जनरल शंकर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ये अपनी टिप्पणी दें 3 हेड्स के अंदर। एक तो फॉरेन पॉलिसी, जो एक जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, अभी जो मल्टीपोलर चाइना और यूएस के बीच में जो अलायंसेस बिल्डअप हो रहे हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन और उसके बिजनेसेस आजकल ग्लोबली फैले हुए हैं, और हमारी इंडियन डियास्पोरा इतनी फैली हुई है कि हम एक सॉफ्ट पावर के तरीके से फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपनी जो नेशनल ट्रस्ट है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और लास्टली, जो ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के ऊपर बातचीत हुई थी G20 के समिट के दौरान, इसके ऊपर भी मैं जनरल शंकर से कहूंगा कि वो एक टिप्पणी करें। सर, या आपके व्यूज अभी। या थैंक्स अ लॉट। आपने इतना सवाल पूछ लिया। एक्चुअली इट्स अ बिग क्वेश्चन, बट विल एड्रेस इट इन दिस थिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो G20 में जो भी हुआ है और इंडिया इज रिजन वगैरह वगैरह, इससे पहले 6 महीने पहले ये आर्टिकल, ये कार्टून निकला था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। दिस टेल्स यू वेयर इंडिया इज, बिकॉज व्हेन समवन फ्रॉम हु इज योर कॉम्पिटिटर, हु इज योर एडवर्सरी, जिस तरीके से बोलिए,
our relationship with China has not been easy. He puts out an article like this, where the people who are competing for the power in the globe are four, and one of them is India. ठीक, it means something. और मैं ये जो कार्टून है, तकरीबन जब भी ये बात आता है, वेयर इज इंडिया इन द ग्लोबल पावर मैट्रिक्स, ये मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अमूमन हम जो सोचते हैं हमारे बारे में, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. बाकी जो सोचते हैं हमारे बारे में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट शुड व्हाट spur us on. So next point is, I converted that cartoon into this matrix, which I keep telling. This is probably the 6th or 7th time इस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं. अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है in this quadrilateral is across the diagonal attracted to USA, and across the other diagonal, opposite diagonal, China and Russia are attracted. Now let's take India's case. I mean, if you view it globally, it's now very clear that USA will be a dominant power. Russia will be a weakened power, and it will be entangled in this war. And by the time things come out, it will emerge a weakened power. Though it will still be military strong, it will still be an energy giant, but economically, though at this point of time everyone says it's recovered economically, the war economies do not perform well as a rule, and that will play itself out. China is an aspiring power. It remains an aspiring power while being in decline, क्योंकि इसका आबादी घट रहा है, इसका अर्थव्यवस्था तो आजकल टप है. तो चाइना जो है बड़ा अस्थिरता में घूम रहा है, और इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज बिकम अ बैलेंसिंग पावर विच इज इमर्जिंग फ्रॉम रेटिसेंस. क्योंकि रेटिसेंस इसीलिए कि हमें पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हमारा इच्छा भी नहीं था. हम इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू इवन टेक इट्स फुट फॉरवर्ड टू बिकम अ बिग पावर, बट टुडे इट इज सो. I'll talk of this IMEC a little later, right? So you say, what should our focus be to become a great power or a superpower by 2047? There are a few ingredients of being a superpower by 2047, and the first ingredient मेरे हिसाब से is internal stability and peace, right? Internal stability, अगर आप से 10-15 साल या 20 साल पहले के वनस्पत अगर आप देखोगे, तो आज के दिन हमारा इंटरनल स्टेबिलिटी इज अ लिटिल बेटर देन बिफोर. In fact, it's far better than before. Kashmir problem is under control, and the Northeast is generally under control, though we have had this problem in Manipur. It's only 3 months old. Let's see how it moves. So, and the left-wing extremism inside is also under control. Our economy has been going on well, and our economy will continue to do well because the people of India are the ones who power this economy. ये हमारा इकोनॉमी जो है, अगर आप हमारा हिस्ट्री देखोगे, ये कभी भी एक गवर्नमेंट के ऊपर या एक लीडर के ऊपर नहीं निर्भर था. ये people of this country have taken our economy forward. The people who have gone abroad have taken this economy forward, and that's the history of India. Ki, we have been a unaided but opposed economy throughout, and we have still become the 5th largest economy. The economies ahead of us, like China, Japan, and Germany, were aided and completely with a peace dividend. Despite that, we have come where we are. So I don't see us going back. But what is that sharp focus you need to become a superpower or a great power or a regional power, where in the Indian Ocean you are, the undisputed net security provider? Economic power has to grow up. इसमें कोई doubt नहीं है. There's no two ways about it. We have to manage our neighborhood properly. Our neighborhood has to be with us.
Now, if you look at it, you already see the indications. Say 5-6 साल पहले ये दिस वाज द नॉर्मल सोच था कि हमारे चारों तरफ एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना का, वो लूजन हो रहा है। नेपाल में भी कोई बदलाव आ गया, भूटान तो हमारे साथ है ही, बांग्लादेश में बदलाव आ गया काफी हद तक, श्रीलंका इज ऑलमोस्ट ऑफ द चाइनीज रडार, उनका बोलबाला वहां कम हो गया, मालदीव्स, राइट, इवन अफगानिस्तान इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स अस, though they have opened, the Chinese have opened a consulate in Afghanistan and a new ambassador has gone there. ये सोचने वाली बात है, चाइना का एम्बेसडर अफगानिस्तान में है और इंडिया में पिछले अक्टूबर से नहीं है, ठीक है। और सो there is, despite all this, our neighborhood is under control, so the neighborhood first policy is okay. इसमें सर मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आपने जो बोलिए टिप्पणी दी है बोलिए। अभी। एक तो पहली बात, जब अफगानिस्तान से अमेरिका ने विड्रॉ किया और सभी ने सोचा था कि अभी तो अफगानिस्तान के अंदर और भारत का कोई मिलाप नहीं रहेगा और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, पर इंडिया ने अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसका इस्तेमाल किया और चाबार पोर्ट के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान ने एज यूजुअल हमें मना कर दिया कि आप लैंड बॉर्डर से आप कुछ भी सामान अफगानिस्तान में नहीं भेज सकते, तो हमने एक दूसरा रास्ता निकाल के उनको वहां पे उनकी मदद की। और आज के दिन भी हमारी जो एक टेक्निकल टीम है उधर, वो पूरी सहायता मौजूद पहुंचा है। रही है अफगानिस्तान को। और मजे की बात यह है कि आज अफगानिस्तान वाले एडवाइजरी देते हैं कि भी पाकिस्तान मत जाओ और पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान मत आने दो। या सो दैट्स, तो देयर नो डाउट अबाउट इट, जो आप बोल रहे हो कि हाँ जी। we have got hold of the thing. So the point which we need to, our foreign policy is good. एंड एक और सब Right. पॉइंट, जो Yeah. जो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, जब उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही डूब गई थी, और जो चाइना जो उनके मतलब जिन्होंने उनकी बड़ी मदद की, वो हंटम्पोटा पोर्ट भी बनाया और उसको फिर वो कब्जे में करना चाह रहे थे, उस टाइम भारत ने ही उनकी पूरी मदद दी और उनको पूरी एड दी, मेडिसिन दी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दिए। और आज के दिन उनके जो राष्ट्रपति हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के साथ अपना डायलॉग खुला रखना चाहते हैं। Yes. और वो अर्थव्यवस्था के कारण ही इनका जो बीआरआई इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी थोड़ा दुनिया को Down पता हो लग गया। गया कि भाई ये गलत काम हो रहा है जो भी हो रहा है उनके देश के साथ। थैंक यू सर। नॉट ओनली दैट, यहाँ तक आज यूरेशियन टाइम्स में एक आर्टिकल निकला है वेयर चाइना, नेपाल नेपाल ने बोला है कि जितने भी बीआरए प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना को नहीं दी जाएंगे, बट इट विल बी ओपन टेंडर बेसिस वेयर इंडिया कैन आल्सो पार्टिसिपेट। ये एक, इट्स अ बिग चेंज। सर आगे क्या होगा देखेंगे। तो काफी चीज, काफी हद तक हमारा इर्द गिर्द बदल गया है। तो जो, राइट, दूसरी बात यह है कि इन टर्म्स ऑफ बैलेंस जो आपने पूछा है कि G20 हैज शोन कि इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वर्ल्ड, क्योंकि वी वर द वंस हु ब्रॉट एवरीवन टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड वी कुड हैव अ दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टरनून इटसेल्फ, सर right? So that balance we have brought, and that map which I've shown you and that quadrilateral gives you the balance. Okay, the foreign policy is good, or neighborhood policy is working, and whether you like it or not, Pakistan is down and out, and I don't think it will recover in a hurry. And at this point of time, China is also on the back foot, which is important. And so you get a window of opportunity till such time China recovers. And China won't recover so fast for the next 5 to 6 years. इसमें So, पाकिस्तान के ऊपर एक कुछ बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। अभी जो G20 खत्म हुआ तो आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे, जो कि पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं कनाडा, यूएस के अंदर और देशों में, अब उन्होंने टिप्पणी करनी शुरू कर दी है कि हमारा देश 76 ईयर्स के बाद कहाँ पर है, और भारत जिसको हमने अपना दुश्मन बनाया था वो कहाँ पहुंच गया। Yeah, I और agree उनकी with you जो मिलिट्री completely. लीडरशिप और उनके जो वेटरन्स भी हैं उनके पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के, उन सब के अंदर ये जागृत एक जो डिस्कशन पॉइंट आ चुका है, और ये अपने इंटरनल डिस्कशंस काफी हो रहे हैं कि क्या ये दुश्मनी इंडिया और भारत के साथ उन
का उनको कुछ फायदा हुआ। और आज मैंने आपको एक वो टिप्पणी भी भेजी थी एक पाकिस्तान मेजर जनरल हाँ की, वो और या उनको बड़ी चिंता है कि अब उनके देश का क्या होने वाला है। भाई, उनके देश का क्या होने वाला है, उनका वो चिंताजनक होना चाहिए, और दे शुड दिस थिंग, बट द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान आर डिफरेंट फॉर द सिंपल रीजन देयर इज अ क्लिक. You know, I was also reading, I was also seeing a program called The Black Hole, सर, and where one of the authors who's put out a book about India-Pakistan war, in fact, Pakistan wars and an alternate history. He says there's a clique operating in, always been operating in Pakistan, and it is a clique which defines the history of Pakistan by taking actions the way it deems fit. And so, any logical reasoning like this, what you're saying, normally doesn't happen. So, we leave it that out. Pakistan सर, can now keep looking towards Afghanistan and keep, struggling internally. But one point which I want to highlight, which you highlight, this thing, a third aspect is when you say defense of Indian interests globally, you need to expand your military. I mean, there's no two ways about it. The Indian armed forces have to be the undisputed net security provider from the Gulf of Aden to the Malacca Strait. इसमें कोई, but this has different layers. The first layer is that, look, you have to have a strong armed forces, which is probably continentally based, to ensure the territorial integrity of the nation is secure. हमारा sovereignty और territorial integrity के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए. That's the first layer when you talk of our thing. The second thing is protection of our island territories, which is an adjunct to this. सर, Now, the third thing which is there is that when you say net security provider in the Indian Ocean region, your navy has to expand. There's no two ways about सर, it. Now, again, there are two shades. One is the conventional protection of sea lanes, communications, vagara, vagara, vagara. The next thing is response to humanitarian assistance and disaster response. जिस तरीके से हमने 2004 में किया था, because lot of nations in this area look towards India for disaster relief, and we also have a huge migrant population who's residing abroad, who need to be pulled out many times as a disaster response. हमने यमन में भी किया था, अभी चाइना में भी किया था हमने. यस सर, ये क्षमता होना चाहिए. यूक्रेन में भी किया था जब. So that's part of our capability, that you do outreach to pull, to ensure the safety and security of Indians, the Indian diaspora who are living abroad. That's a very important part of our capability. Then the ability to come to the assistance of nations which are around us. And then, of course, the conventional capability, or maritime capability. So these 3 to 4 layers are very important. The fifth layer, which is, I think, is the outermost layer, is our capability to contribute to the UN the way we have been doing so. Because there is no, at no given point of time, has anyone, in fact, that I'll put it ulta, कि सब चाहते हैं कि इंडियन ट्रूप्स आके अपने उनके इलाके में डिप्लॉय करें, ताकि वहां का जो स्थिति है स्तर हो सकता है, जहां तक सर, where UN is deployed. So I think these are the things. If you want, we can talk of the IMEC. I think the IMEC, which I want to spend a couple minutes. We हम सबको पता है कि मुंबई से लेकर ये ग्रीस तक ये बनने वाला है through the Arabian Peninsula. What are the important things about the IMEC जो हम कम समझते हैं? First and foremost, the IMEC is a corridor of well-to-do countries. देखिए BRI में इसमें क्या फर्क है? BRI was a rich China and a poor country, like आप श्रीलंका ले लीजिए, टंजाना ले लीजिए, केनिया ले लीजिए, या जिम्बाब्वे ले लीजिए, या पाकिस्तान ले लीजिए. हाँ जी सर, इसमें ऐसे नहीं है, सबका इक्विटी बराबर होगा. एवरीवन हैज इक्विटी इन द शेयर. दूसरी बात, ये जितने भी कंट्री हैं, ये सब क्या है? दे आर ऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स टू ईच अदर. बिल्कुल सर,
और इसका जो अंडरलाइंग थीम है I2U2, राइट। तो ये कॉरिडोर तो चलेगा क्योंकि सबके पास पैसा है, सबके पास इरादा है, सब अपना अपना कर। और इट्स द हार्ट ऑफ आईमेक इज सऊदी अरेबिया एंड यूएई। क्यों? दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी। इट इज इन देयर इंटरेस्ट दैट दिस कॉरिडोर कम्स थ्रू। और उनको ये भी पता है कि दे कैन नॉट अलाउ चाइना टू कम इन बियॉन्ड द पॉइंट, क्योंकि चाइना का के साथ इनका ट्रेड जो है वो कभी इस कॉरिडोर के जरिए नहीं जाएगा, और इस कॉरिडोर उनके लिए जरूरत है इफ दे वांट टू डाइवर्सिफाई। बिल्कुल सर। सो दिस कॉरिडोर इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए, आपको दोबारा मैप दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैप अगर आप देखेंगे तो ग्वादर जो है इज द टॉप ऑफ दैट हॉर्मोज स्ट्रेट, that is destined to become a Chinese national, Chinese naval base. Djibouti, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, that is already a Chinese, base. And already China has put its ships in this area under the guise of anti-piracy, and they're doing regular patrolling here. अगर हम alternate system नहीं लाएंगे तो one day the Chinese are likely to control this area. The moment this corridor comes up, the security interests of India, UAE, Saudi Arabia, Israel, and USA come into play, which means that this entire area will be kept open by the security forces of these nations, which सर means सर the Chinese footprint क्या है, ये घट जाएगा। And overall अगर आप देखेंगे तो everyone will depend on will depend on India to guard this gap, this sea gap between India and UAE. Okay, and then all these countries have to export their energy, especially the Middle East countries. So to that extent, I think it's a tremendous thing, and I hope I've covered all the bases जो आपने बात किया। हाँ जी सर। एंड आई थिंक एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आईमैक के बारे में ये है कि Yeah, इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर्स हैव टू बी is the budget that they have planned for, and it's going to be executed by giving out tenders, so it will actually sort of kickstart the economies along the entire yeah, yeah, supply chain. So correct. it's a very novel way of doing it, much better than what the BRI system was, because BRI was basically uh, you know uh, something being given away for with a ulterior motive in mind Yes, to yes, yes. take over the political regime as well as the territory of the countries involved. And this या is इसमें in क्या this way है, is not म्यूचुअल involved at all. बेनिफिट है। नो नो, हाँ सर। आपने जैसे बोला ये म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम है ये, राइट। बिल्कुल वेर बिल्कुल एज सर। आई मीन मैं ये यही बोलूंगा, अगर फाइनेंशियल टाइम्स में बोलूंगा तो ये दिस इज लाइक अ म्यूचुअल फंड स्कीम। बिल्कुल और वो सर। जो बीआरआई और बीआरआई एंड बीआरआई एंड सीपीसी आर लाइक क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग जैसा है, डायरेक्ट शेयर खरीदो, right? वो है। वो तो है So सर। that is how I look at it, and I am very positive of India's role in this, and more India जो है ऐसे roles में शामिल हो तो इसका our rise will be better. Okay, can we move to your next point which you wanted to raise? हाँ जी सर। द नेक्स्ट थिंग वाज Yeah, दैट I'll tell you. यू नो आप एक चाइना को बहुत ही क्लोज नजरिए से देखते हैं, और साथ के साथ यू बीन वाचिंग द यूएस इकोनॉमी आल्सो, एंड ये जो टसल चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में कई सालों से चल रही है, और सभी थिंक टैंक्स का मानना है विश्व के जो ये एक एशियन सेंचुरी है हमारे लिए। जो एक यूरोप यूएस सेंचुरी थी वो एक किस्म के खत्म हो गई है, और इंडिया जो इस मौके पे है, ये एक इसको इस पूरे जो बर्की एनवायरनमेंट है इसके अंदर नेविगेट करके अपने एडवांटेजेस पोजीशन पे आने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आप थोड़ा Yeah, बात करें ये इसके लिए मैं वापस इस स्लाइड में जाऊंगा। सर। देखिए, USA wants to remain the dominant power without doubt. Okay.
Okay, and China wants to challenge that. Okay, that is one way of looking at it. The other way of looking at it, regionally, the powers which are under, in the Asian powers, China and India are at loggerheads with each other. This is a given. sir. Now, if USA wants to control China, it has no other choice but to have India on its side. It takes the combined military and diplomatic and economic heft of USA and India to control or contain China. इसके अलावा कोई और चारा नहीं है. सर दूसरी बात, when we say Asian century, ठीक है, ये एशियन सेंचुरी जो टर्म है, ये इस्तेमाल किया जाता था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना बीइंग द ग्रेट वन, सुप्रीमो supremo, and India being there, and that is how the Chinese also articulate it. और तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये चाइना का सेंचुरी, ये एशियन सेंचुरी है ही नहीं. आई मीन, व्हाई इट्स नॉट अ एशियन सेंचुरी? It is not an Asian century because if you say Asian century, it has overtones that it is China's century. Okay? तो इस पे सर आई थिंक एक बहुत जरूरी बात है कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं और जो हमारे सीनियर वेटरन्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इसको एक नया टर्म देना चाहिए. इसको बोलना चाहिए कि ये एक इंडियन सेंचुरी है, क्योंकि आपके डिस्कशन और हमारे डिस्कशन के दौरान दो बातें तो बाहर आ गई कि एक तो चाइना की जो अर्थव्यवस्था वो गिर रही है नीचे, रशिया वीक पावर होते जा रहा है, अमेरिका की खुद की हालत इतनी अच्छी नहीं है जिसके बारे थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे, और इंडिया एक ऐसा देश है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उनके साथ हमारा ट्रेड भी है और ट्रेड सरप्लस है चाइना की तरफ $100 बिलियन का. दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है. चाइना हमारा यूएसए के साथ रिलेशनशिप डेली इम्प्रूव होते ही जा रहा है हर सेक्टर के अंदर. रशिया के साथ भी हमने अपनी सांठ गांठ बना के रखी है ताकि वो भी एक किस्म से हमारे साथ बना रहे हमारे पूरे ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट के लिए. तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि इस टर्म को रीस्ट्रक्चर करके यार इसको रीनेम कर देना चाहिए एज द इंडियन सेंचुरी. ये आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. मेरी तरफ से भी दिस हैज टू बी द इंडियन सेंचुरी, राइट? अगर आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने बोला था, जब इंडिया और यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय हुआ था, और इट वाज वेरी क्लियर वी विल बी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. उन्होंने बोला कि द इंडिया यूएस पार्टनरशिप विल बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ दिस सेंचुरी. सर उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप विल बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप. ही सेड इंडिया यूएस, राइट? सो वो तो अभी साकार हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है. और मेरा मानना ये है कि चाइना का दिन गए. ये मैं मंडे के दिन या नेक्स्ट वीक समटाइम I'm going to have a program on why China will never recover. In fact, it will continue to decline. But वो अलग बात है. So I think the time has come when we say India is on the rise, right? And the Indian century is what one can foresee. मैं इसका जो आपने बोला, जो सही बोला कि इंडियन सेंचुरी है वगैरह, लेट मी ऐड ऑन टू इट. अगर आप 80 के टाइम देखोगे, 90s के टाइम देखोगे, पीपल सेड दिस इज गोइंग, द नेक्स्ट सेंचुरी इज गोइंग टू बी ऑफ चाइना. 20 साल पहले बोलना शुरू कर दिया कि चाइना आ रहा है, चाइना विल बी द नेक्स्ट ग्रेट थिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है? तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ. China is no more. I mean, when it's there, it will remain. It will still remain the second largest economy. It will not collapse, but it's going to be stagnant, and it's going to be internally, enmeshed in a lot of problems. But like I said, that's a different story. Some part of it yesterday, when I was talking with Dr. Christine Archin, this came out, but it needs more deliberation. But overall, I see India growing. I'm a strong proponent that India has no choice but to grow, despite itself. And we have सर to ये believe in that. वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी भी थी, एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने पढ़ी थी. उसमें लिखा था कि
2050 तक इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है दैट विल नंबर 2 इन द वर्ल्ड, सो Yes, इट हैज टू ग्रो। it एंड has ये to grow. इसको मैं मान के चलता हूँ, ये एक एटॉमिक रिएक्शन की तरह है कि जिसमें एक वो रिएक्शन शुरू हो गया है, इट कैन नॉट एंड नाउ, It cannot end. You can't इट reverse हैज it. टू जस्ट ग्रो। हाँ, इट हैज It टू has जस्ट to ग्रो। grow. It's a fission which is has to grow, right? Whoever. अच्छा एक और चीज है which dictates that we will have to grow is the energy scene in the world. सर, देखिए आगे जाते जाते energy has got limitations in the world on earth. We उतना ही है हमारे पास तेल और नेचुरल एनर्जी वगैरह जो भी बोलोगे, इवन रिन्यूएबल्स उतना ही आप पैदा कर सकते हो ऊर्जा, जितना यहाँ आपके पास है सीमित है ये। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको स्पेस में जाना पड़ेगा, और ये सबका मानना है कि जो स्पेस में जाके एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, खास करके या फ्यूजन एनर्जी अगर हार्नेस कर सकते हो, तो यू विल बी अ सुपर पावर टुमारो। आज तक 4 ही देश हैं जो स्पेस में गए हैं और बिल्कुल सर। मून में लैंड किया है या मार्स में गए हैं, और उनमें से आप एक हो ऑन योर ओन। ठीक, आपने अभी मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो आदित्य लॉन्च हमने किया टुवर्ड्स द सन, इट इज नॉट टू सी द सन क्लोज और क्योंकि भाई कि कितना गर्म है सूरज। इट इज अबाउट फ्यूजन एंड एनर्जी एंड प्लाज्मा एंड व्हाट एक्स वाई जेड जो भी है, आई मीन दैट आई कैन हैंडल इट सेपरेटली एंड इट सेपरेट इवेंट। सो and whoever has this capability will be tomorrow's superpower, and we are one of the four. बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो आई एम वेरी सैंग्विन कि कल के दिन आई मीन हम तो शायद ही जिंदा रहे इस जमाने को देखने के लिए, बट और नेक्स्ट जनरेशन विल डेफिनेटली बी इन अ डिफरेंट यू नो क्लास ऑफ इट्स ओन। या इसमें सर 2 पॉइंट ऐड करूंगा। एक तो कि अभी एक जो मेजर बिजनेस हाउस है हमारे देश का, अ, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस में भी काफी तरक्की की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर वो एक सोलर एनर्जी को उसी तरीके से घर घर में पहुंचा देंगे, ये उनका एक मुद्दा है। दूसरा, उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल कैप्सूल की टेस्टिंग वो कर रहे हैं। एंड इन दोनों चीजों से दो फायदे होने वाले हैं कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो जाएगी, और जो हमारे आज देश की जो फॉरेन करेंसी है और हम अपने फॉरेन करेंसी के जो रिसोर्सेस ये फॉसिल फ्यूल को खरीदने में लगा रहे हैं, उसमें काफी गिरावट आएगी और ओवरऑल इकोनॉमी इस तरीके से इम्प्रूव होगी, और कॉस्ट ऑफ all our products will also further come down इंक्रीज। because of the या green energy that we are initiating in the days to come. Yeah, I agree with you completely. The hydrogen economy is the future. What at अभी जो हम कर रहे हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी के दौरा that is through the fuel cell route, that is you split water into hydrogen and oxygen and use hydrogen as the Yes, sir. energy. Okay, but the future is in fusion, right? And बिल्कुल उसके सर। लिए भी you need USA because USA has made breakthrough in fusion, and you have a space program, and both India and USA put together can harness this fusion energy. And once you get hold of fusion, you're hands free after that. ट्रू सर। So, yeah, shall we take the next point? हाँ सर, नाउ क्योंकि बात कर रहे थे इंडिया की राइज टू अ सुपर पावर, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने उठाया था कि एक हमारे पास अपनी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिसके अंदर हम अपनी काबिलियत और अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हम खुद डेवलप करें और हमें किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके लिए आप ऑलरेडी अपने सेकंड करियर के अंदर एज हेड ऑफ द एरोस्पेस डिपार्टमेंट एट आईआईटी चेन्नई, आप काफी कुछ कर रहे हैं इस तरफ, और मुझे मालूम है जो हमने आपसे बातचीत में एक्सचेंज किया है। पर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो हमारा डीआरडीओ अंडर रिस्ट्रक्चरिंग, और इसके ऊपर भी आप एक शायद प्रोग्राम करेंगे एक 1-2 दिन के अंदर, एंड मैं चाह रहा था कि आप इसके ऊपर टिप्पणी करें कि जो हमारा R&D है, विच इज एक वीक पॉइंट है हमारे पूरे इकोसिस्टम में। डीआरडीओ की कहानी सबको मालूम है, एकेडमिया आईआईटीज वगैरह अब काफी एक्टिव हो गए हैं ओवरऑल,
एंड हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसके अंदर थोड़ा R&D के अंदर कम है। वो चाह रहे हैं कि वो जॉइंट वेंचर करें किसी टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ, उसके साथ टेक्नोलॉजी लेके फिर वो कोई R&D कार्रवाई शुरू करें जहाँ पे उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो ये थोड़े गैप्स हैं हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर। तो इसको पूरा एक सिनर्जाइज करके हार्नेस करके इसको कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं चाह रहा था कि आप कुछ या बोलें। आपने सही बात बताया कि अनलेस यू हैव अ ह्यूज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, राइट, we will not be able to reach where we have to reach in terms of a power, because the military industrial complex क्या करता है, it not only powers your military self sufficiency and tech thing, it enhances your technological background. हम सब ये देखिए, the military industrial complex of USA was set up in the last century, and that has powered USA economically. और उसी के पीछे lot of technological breakthroughs have also come, and lot of technological breakthroughs have come, which have been used in the civil field to push forward their technology dominance and global dominance. So it is a self-feeding system. You need to have something like that. क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है, क्योंकि आधा से ज्यादा जो हमारे ही लोग हैं वहां यूएसए में जाके ये टेक्नोलॉजीज पैदा कर रहे हैं आज के दिन. बिल्कुल सर। आप आप चाहे गूगल ले लो, एप्पल ले लो, या माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, या बहुत जितने कंपनीज हैं सेकंड टायर थर्ड टायर कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, वहां तो इंडियंस ही कर रहे हैं. तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह है, राइट. इसके लिए गवर्नमेंट हैज टू डू अ लॉट. दिस कांट बी डन बाय प्राइवेट प्लेयर्स. इवन अगर आप इसका हिस्ट्री आप यूएसए में देखोगे, it was the government which invested into all these firms, right? सर ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगर आपको याद होगा और आपने भी शायद पढ़ा होगा इसके बारे में, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई थी, अमेरिका ने इमीडिएटली जितने भी जर्मन साइंटिस्ट थे वो उनको उनको पकड़ के ले आए. इमीडिएटली पकड़ के ले आए। हाँ. और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो चाइना है इसने भी काफी कोशिश की और अभी भी वो कोशिश करता है कि वो जो भी टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का कोई जो मालिक है या जो इनोवेटर है, वो इमीडिएटली उसको पैसा देकर अपने देश में ले आते हैं कि भाई आप यहाँ कीजिए, हम आपको इतना बेशुमार पैसा देंगे कि आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं। अब मेरे ख्याल हमें भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जो हमारा जो डियास्पोरा बाहर है, जिन्होंने बाहर के देशों में जाके उनके लिए टेक्नोलॉजीज बनाई, उनको इंसेंटिवाइज करके वापस लाया जाए ताकि वो इधर आके अपना ये काम करें और उनको भी उसकी बेनिफिट्स मिले। ये आपने जो बोला वो एक दृष्टिकोण है, विच इज मेरे ख्याल में थोड़ा पुराना दृष्टिकोण है. मैं इसलिए क्यों बताता हूँ. आपने अभी एक डील किया था आईसेट विद यूएसए, सर राइट, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. ये जो डील है, दिस अलाउज यू, ये एक रास्ता है जिससे आप वहां का टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आ सकते हो, इसके बावजूद कि आपके लोग वहां हैं. ओके. सो द ओल्ड वे ऑफ लुकिंग इट वाज कि ठीक है, वहां के साइंटिस्ट लेके इधर ले आओ और इधर उनको पूरा व्यवस्था दो, गिव ऑल फैसिलिटीज, यहाँ टेक्नोलॉजी उत्पन्न करो और हमारा प्रोडक्ट्स आउट करो. वो पुराना तरीका है मेरे ख्याल में. अभी जो नया तरीका है इन द डिजिटल एज, इट डजंट मैटर वेयर यू आर, इट्स लाइक रिमोट वर्किंग. बिल्कुल सर। नियत ठीक होना चाहिए, ब्रिज ठीक होना चाहिए. जो ब्रिज है वो आईसेट है. आईसेट क्यों ब्रिज है? हमें ये समझने की कोशिश बहुत हमें ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका हैज द टेक्नोलॉजी एंड द वेयर विद ऑल, it doesn't have the manpower. India doesn't have the technology or the wherewithal, it has the manpower. Or in terms of STEM subjects, we are far ahead of USA. बिल्कुल सर। So, if you are a strategic partner to USA,
इन दोनों का मिश्रण अगर आप कर सकते हो तो ये जो कहानी है आगे बढ़ेगा और आपको बहुत फायदा होगा। नंबर एक। नंबर दो, व्हाई इज आईसेट इंपॉर्टेंट इन द लार्जर पिक्चर। 8-9 साल पहले जब मैं सर्विस में था तो हमारा सोच था कि ये डीटीटीआई के जरिए टेक्नोलॉजी आप लेके आए, राइट। डीटीटीआई वाज एंटायरली डिफेंस बेस्ड, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सर राइट। इट वाज डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव फ्रॉम यूएसए टू इंडिया अंडर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पर वो फेल हो गया। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि उस साइड भी गवर्नमेंट था, इस साइड भी गवर्नमेंट था, और बीच में उनके बाबू या हमारा बाबू कोई फर्क नहीं है। उनकी फौज और हमारी फौज में कोई फर्क नहीं है, सोच वही है, ठीक। उनका गवर्नमेंट और हमारा गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी एक विचार, तकरीबन ऐसे सोचते हैं सब। वो एक गवर्नमेंट के नजरिया से सोचते हैं, ठीक है। उसके तहत वो पूरा फ्लॉप हो गया। तो अभी जो रास्ता अपनाया जा रहा है आईसेट थ्रू द प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट रूट, ठीक। जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा और जो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप जाके अपना डील करो यूएसए के कंट्री, ये इसके साथ, ताकि आपको भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। डील, इट्स अ डील। बिल्कुल It's not a सर partnership. It is not a MOU. No, nothing. It's a deal. It's a deal where our people can, profit, and their people can also profit on a ट्रू mutual basis. So, इस process में अगर if our both the governments help the private people to do, जो आपने बोला कि हमारा private people have to get into the deal, then you will see that this ISET will work. पर उदाहरण के तौर पर अगर वो माइक्रॉन का फैक्ट्री आके इधर चिप्स बनाना शुरू करे, द पैकेजिंग ऑफ द चिप्स, एवरीथिंग, और जिस तरीके से एप्पल आके यहाँ अपना फैक्ट्री लगा रहा है, ये अगर थोड़ा तो शुरू हो जाए तो यू विल सी थिंग्स इंप्रूविंग, बिल्कुल सर राइट। नेक्स्ट पॉइंट विच, जो क्यों ये नया सिस्टम अपनाने की जरूरत है, अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च सेंटर आज के दिन, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, उनका रिसर्च सेंटर यूएसए में है, एक रिसर्च सेंटर इंडिया में है, और तीसरा रिसर्च सेंटर चाइना में है। रिसर्च सेंटर्स वेयर टेक्नोलॉजी, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी इज मेड। नाउ दिस इज अ मॉडल हमारे पास है ऑलरेडी। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही नहीं है, आईबीएम का भी यही हालत है। सर बहुत कंपनीज हैं जो इनका रिसर्च सेंटर अब स्थित है यहाँ इंडिया के अंदर, राइट। सो if you can leverage these three things, ISET, these research center initiatives, and the private industry getting along, and club it with defense, अगर आप वो देखोगे तो आपको you will go on a different thing. Now रही बात आपका, आपने बोला डिफेंस रिसर्च के बारे में क्या करना चाहिए, किस तरीके से how to get expand defense research, जो आप बहुत अहम बात है। First, I want to clarify, I am not the head of aerospace department in IIT Madras. I am one of the professors in अच्छा सर IIT Madras aerospace department. And मैं क्या कर रहा हूँ, मैं I'm only I'm being the bridge being the bridge between the IIT Madras and the armed forces first. अच्छा सर क्योंकि हमारे पास जितने ये प्रोफेसर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, उनको पता है सब कुछ टेक्नोलॉजी इज देयर, और उनको ये नहीं पता कि वो ग्राउंड के ऊपर कैसे अप्लाई करें। हमारे फौज को ये नहीं पता हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। तो ये ब्रिज बना रहा हूं मैं। हमने 2-3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसकी वजह से वहाँ पीपल आर गेटिंग कॉन्फिडेंट। IIT, when let me give you a thing. When I started my second career in IIT, सर these people never knew what army was. ओ So माय गॉड I took them to various expos, डिफेंस एक्सपो में हमने इनको बोला भाई खर्च करो। एक छोटा स्टॉल लेने के लिए 15 लाख खर्च करना था। मैंने कहा खर्च करो, आपको फायदा होगा आगे जाके। वो उन्होंने लगाया। एक IIT का स्टॉल लगा जब डिफेंस एक्सपो चेन्नई में हुआ, उसके बाद पीपल केम इनटू दिस थिंग। नाउ आजकल
everyone wants IIT Madras to come and be there in the Defense Expo. आजकल ये बोलते हैं आप स्टॉल मत लगाइए, आप हमारे स्टॉल के साथ शरीक हो जाइए, बिल्कुल। राइट? एंड उसके बाद हमने वी हैव गॉट MOUs with HAL, OFB and many DRDO and whole lot of people on defense issues. Okay, so that has happened. The second thing is with the army, we've got tremendous exposure where army has given us some projects, very good projects. एक प्रोजेक्ट में बार बार बात करता रहता हूँ, रैमजेट टेक्नोलॉजी का सर प्रोजेक्ट है, इन विच वी आर द वर्ल्ड लीडर्स. मैं खुलेआम बताता हूँ, वी आर द वर्ल्ड लीडर्स, और कोई हमारा नजदीक नहीं है, नजदीक नहीं है एज फार एज रैमजेट फॉर आर्टिलरी इज कंसर्न. ओके, सो देयर इज अ सक्सेस. एक हाथ सक्सेस हो गया तो इट विल इंक्रीज, दिस ब्रिजेस विल इंक्रीज. अभी क्या है कि पिछले 6 साल 7 साल हो गया मेरा, 2017 I joined to the 23. In these 6-7 years, we now go and talk to officers in their higher command courses, naval higher command, army higher command courses. फिर हम जाते हैं NDC. NDC is a great success for us क्योंकि हर साल पहले दिन से आज तक हर साल हमने NDC के साथ हमारा टीम जाके बात किया है, राइट? एंड दे आर द फ्यूचर कमांडर्स, फ्यूचर लीडर्स, उनके साथ हमने बात किया है. सो ऑल दैट हैज हैपेंड, अ लॉट हैज हैपेंड, राइट? And like I said, we participate in all the expos, everything. So we are much closer. For the first time recently, the ADG of the Army Design Bureau came to Chennai and spent a whole day with us. Oh, excellent, sir. This is very good. Right, and he's taken a lot of ideas. So this is only from Chennai. There are other institutes. So things are moving. ऐसी बात नहीं है. But what we need to do is we have to develop an alternate system to the DRDO in terms of research. It will take time. Abhi, from what I've come when I joined to now, there's a huge change. There's a huge change, right? There are a lot of people, there are a lot of startups who are being incubated in IIT Madras. The scene is good, but is it good enough? It's not that good enough. It will take time. Let me be very honest. Things have Sir, changed. There's a sea change, but that sea change is not deep enough. It will come. And then there's a problem of the DRDO needs to change. DRDO itself needs to change, which it has not changed because of many other reasons. उसके लिए तो next weekend, next Saturday, I'm going to talk with General Ahuja on this issue. हाँ sir. What overall of DRDO? After all, the government has also felt the need. उन्होंने एक 9 committee member and 9-member committee स्थापित किया है who will look into the overall of the DRDO. हम भी बात करेंगे कि क्या कैसे हमारे से कोई पॉइंट्स ले सकते हैं और वो आगे कर सकते हैं. So these are my views on this thing. There's a change which is happening already. OFB has been broken up. Now, constituents of the OFB are coming to IIT Madras to get guidance, which is good. So we are already dealing with the Munitions India Limited. We're dealing with Armored Vehicles Nigam Limited, and so we are increasing. So this is all that is happening in this field. So should we take the next question? हाँ, बहुत खुशी हुई सुन के सर कि ये सिनर्जी डेवलप हो रही है और अभी सारे इकट्ठे होके एक ही मुद्दे की तरफ और अपना एम हासिल करने की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट जो मेरा सवाल है सर ये था हमारा जो population है, we have sorry, I think I'll come to the last question first, but I'll come back to this. We'll go to this, no problems. हमारी जो पॉपुलेशन है सर, अभी ये तो मैंने विकिपीडिया से निकाला था कुछ आंकड़े के, हमारी जो 50% पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25 की और 65% जो है वो बिलो द एज ऑफ 35 है. और इसके हिसाब से आप चाइना और जापान के साथ कंसर्न करें तो हमारे जो पॉपुलेशन है वो उसकी उम्र काफी कम है. मेरे विचार से ये हमारी जो पॉपुलेशन है ये एक हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है और हमारे देश ने और गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रखे हैं, ITIs खोल रखे हैं. हमारे कई बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, कई बच्चे डॉक्टर्स बन के पास आउट होते हैं. बट जो एसेट बाहर निकलता है हमारा इस ट्रेनिंग के बाद वो
इंडस्ट्री रेडी नहीं है, एंड वो एक प्रॉब्लम है. एंड आई थिंक because of our large population, growing economy, we need to sort of restructure something and address this issue where this asset not only becomes a strategic asset for us, but it should also help us help the aging nations globally to sort of take care of their needs, and maybe increase our footprint in a very soft manner instead of being aggressive like what China is doing, but be there very openly and transparently without या any ulterior motives. देखिए, जो पहले बार आपने बोला कि वी शुड एक्सपोर्ट और यूथ टू अदर्स, टू, वो तो हो ही रहा है, क्योंकि बहुत लोग आजकल आप देखेंगे कि यूएसए जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, इवन मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, हाँ जी और सर. ट्रेंड यूथ टू मैनेज देयर सिस्टम्स, बिकॉज उनके पास दो चीज नहीं है, वो एक तो स्किल नहीं है कहीं जगह, दूसरी बात जैसे आपने बोला, दे आर ऑल एजिंग सोसाइटीज, दे नीड यंग पीपल एंड दे प्रेफर इंडियंस. ये सर. इसमें दो राय नहीं है, ठीक है. तो दे प्रेफर इंडियंस. एज अ रिजल्ट यू फाइंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर ओके विद चाइनीज, आजकल वो चाइनीज से थोड़ा पीछे हट रहे हैं. तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी है वेयर वी कैन डू वेल, एंड इसका हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा. इसमें ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. ये भी लोग बोलते हैं कि भाई देखो, आईआईटी से जितने हमारे बच्चे हैं वो सबसे बेहतरीन बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं और हमारे देश को इस्तेमाल नहीं होते हैं. इसके भी विपरीत हूं मैं, क्योंकि जब तक ये लोग अच्छे हैं, ठीक है, they are the brightest people, good, let them get their opportunities abroad and go. Even if some of them go and become something there, someday it will reverse back. Knowledge will always reverse back. I'm not बिल्कुल worried सर. about it. I'm not too worried about it. Let them grow. They contribute to your national strength and economy by growing there. If nothing, they'll send good money back to their parents. They'll invest back here. So let that happen. There's no harm. But क्या ये वही, I mean, the next question is, okay, some of these boys and girls who get into IIT are bright, but there are equally good and bright people who don't get into IIT, इसरो सर. right? इसरो story. Yeah. And in fact, let me give a personal thing in IIT Madras. We give a lot of value to our postgraduate and doctoral students. They are our best, they are our strength. And Sir. invariably, many of them are not IIT undergraduates. Oh, I see. Yeah. A lot of them are from outside the IIT structure. And now they have come into IIT, they are IITians. Okay. And they are more mature and they're more steady and they produce outstanding results. We would have loved to have our own people, but they don't come for whatever reason. There are many other reasons. ये भी है कि there's parental pressure कि वो लड़के को IIT करा दिया तो he should get a big fat salary, placement abroad, do बिल्कुल सर. MTech, do IIM, and ये वो तो उनके भी आकांक्षा है, ये नहीं बोल सकते हो. और ये जो people, and if you see abroad also, the focus of education and research and is largely in the postgraduate programs and doctoral programs. That's where technology comes out. सर. Technology is not there in undergraduate system. Undergraduate system तो बच्चे हैं, उनको क्या पता है? बिल्कुल बिल्कुल सर. वो तो अपना नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनका फ्यूचर भी ये नहीं पता उनको क्या चाहिए. कई बच्चे तो ऐसे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो क्यों वहां आए हैं. मेरे स्टूडेंट्स हुए हैं. मेरे को थर्ड ईयर में एक स्टूडेंट ने पूछा, सर मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं क्यों एरोस्पेस पढ़ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता. तो they are a different breed, they have to be handled differently, but the other one we have to increase. So nationally you have to increase that quota. You have to, and ये बात है कि this government has done that also. Sir. It's not as if we have not done that, we have done that. There is a effort, but it has to be a incremental effort. ये नहीं हो सकता है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए. It will take time. It's an investment you have to do आज, and maybe 10 साल 15 साल के बाद you will get the results. It will come. I see it happening.
The second thing where we lack, and this is where I'm worried, I'm not bothered about the standard of education. I want skill development and vocational skill development. हाथ से काम करने का वो हाँ जी सर। वी आर नॉट अप टू इट. क्योंकि आज कल मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ भी काफी प्रोफेसर से बात कर चुका हूँ कि दे आर ऑल्सो वरीड कि ठीक है थियोरी में सब ठीक है बट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए वो थोड़ा प्रॉब्लम है. और इसका तीसरा पहलू ये है कि all our colleges which churn out all engineers, they have to be more industry ready, the word you used. How you make them industry ready is why you're going to decide how good we are or not. And this is something which we have to refocus. We have to refocus our education system. Not much is required to be done. We need to refocus. And इसमें क्या है कि the private industry also has a large part to play because giving opportunities for these children to be part of it. And it is not only IT industry, it is other industry also which comes into play in this. इसमें Right? सर It मैं is एक hardcore. Yeah, एक बोलिए. मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। एक ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी थी जो इंडिया में आज भी उनका एक वेरिएंट ऑपरेट करता है। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हमारे जो बीटेक के बच्चे हैं, ये 2 साल के बाद जब किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, चाहे वो एरोस्पेस है चाहे किसी और में, तो उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं है। वो बात करते हैं जो इनोवेटिव इनिशियल जो बेसिक कोर्स है जो इंजीनियरिंग का वही है। So there was no change in the syllabi of the course to address this issue, and they wanted to sort of uh, partner with Indian universities and IITs to give them what is the current technology Yeah, available, so that people are ready by the time they pass out after another 2 years. But somehow मैंने कई यूनिवर्सिटी से बात की, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, they were not ready to accept this change. And I think this is something probably you're at the right place to sort of initiate that. And इसके अंदर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि आज सुबह मैं एक एयरलाइंस पायलट ट्रेनर से बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितनी भी ग्लोबल एयरलाइंस हैं, इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पायलट्स। और उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि ये अपने ट्रेनिंग स्कूल के अंदर टाइप रेटेड पायलट्स को एयरलाइंस को भेजते हैं, ताकि एयरलाइंस अपना टाइम और पैसा ना खर्च करे उसको टाइप रेटिंग के लिए। दैट इज वन। दूसरा, उन्होंने पर्डू यूनिवर्सिटी के साथ इन अमेरिका, व्हिच इज आई थिंक लीडिंग यूनिवर्सिटी इन yeah, एरोस्पेस one एंड of the एयरलाइंस, best. सो उनके साथ बातचीत शुरू की है कि आप हमारे यहाँ कोर्सेज करो ताकि इसको आगे एक किस्म से स्किल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा आपके No, साथ no, शेयर ये करूं। जो आप बोल रहे हो, this moment is there all around in lot of industry. सो ये बात है. Today in IIT Madras itself, I know we have started courses which are absolutely output oriented, सो especially in the postgraduate scene. It's no more of general Karlo, MTech Karlo in अच्छा सर। aerospace. No, it is MTech in aerospace in a particular subject, सब्जेक्ट। okay, or in a particular technology. For example, एक उदाहरण के तौर पर, we have started a MTech in ammunition technology in. हाँ जी सर, आपने दिया था वो मेरे को मैसेज, आई हाँ, रिमेम्बर। ठीक है. So we are doing it. ऐसी बात नहीं है. But these things will take time. क्यों? I'll tell you why. There is a logical reason for this. Because in the West, many universities have gone to output-oriented model of learning and teaching. उस output-oriented model of teaching and learning में basic sciences उन्होंने निकाल दिया. The thrust on basic sciences उन्होंने निकाल दिया. जब वो बेसिक साइंसेस के ऊपर थ्रस्ट निकाला जाता है तो योर कैपेबिलिटी टू डू रिसर्च आल्सो गोज डाउन, कोर रिसर्च. तो आजकल उनका प्रॉब्लम है. इसीलिए हमारे जो यहाँ इंडिया से जो पढ़ के जाते हैं, खास करके आईआईटी से, वहां जाके बेसिक रिसर्च में अच्छा काम करते हैं. सर सो देर आर
two sides to this story. We have to find a via media somewhere, and part of our expansion, I think we need to have a balance. I'm sure True, it will come. it will do that, sir. Right. So the last question which you were thinking of, yeah, Sir, अभी जो space is the new frontier, sir. We just spoke about it. We need to harness energy. We need to make sure we are protected from the space also, and also our s- satellites that are in orbit and various, especially our adversary China has been demonstrating the destruction of satellites wherever it wants. And as we heard in the Malabar exercises, the Chinese, I think, sort of maneuvered their satellites to monitor all kinds of activity that were happening when the exercises were on. So I think that is something we need to really address, and we should be looking forward to the space command, which should not only be military and defense oriented, but also at the other aspects of how it can benefit India. We should be addressing that. yeah. I, the time has come कि India needs a space command. So And ये जो space command है, at this point of time, in my opinion, should be based on uh, a civilian structure. Because the army doesn't have the capability or the knowledge of handling this. true, sir. That's the first thing. It's ISRO. पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इसरो जिस तरीके से ग्रो हुआ है, इट हैज ग्रोन कंप्लीटली एज अ सिविलियन स्ट्रक्चर with hardly any integration of the armed forces. And on the other hand, the army has completely not bothered about space for all these years. अभी ये शुरू हुआ है पिछले 3-4 साल से. So it will take time. It's going to take time. Until it takes time, we need to get uh, the civilian structure or the civilian experts to head the space command in some form. You might have the space commander could be the army man, but the staffing has to be largely civilian. True, true, sir. That's the first thing. The second thing is ये जो space militarization of space, where एक satellite जाके दूसरे satellite को टक्कर लगाए उसको नष्ट कर दे and all, I think is largely science fiction and is imagination. क्यों? You see, any space object travels at over 700 kilometers per second in space. Now, that's a high velocity impact, whether it is small or high, big. So, if you break up a satellite and destroy a satellite, you create a lot of space junk. And that space junk is all, it's like different artillery shells loafing around, unguided missiles in the air. True, And true, sir. those can't be, that can be hit by any other satellite. They can hit any other satellites. They will not differentiate between one satellite and other True, satellites. true, sir. So I don't think that will come that you start shooting down satellites, ASAT and all that, unless it's critical. So that's out. But the other aspects of militarization of space is there. Reconnaissance, targeting, monitoring. Because वो क्या है वो 24/7 है and 365 So, days. So that is important and we have to have, and there's no two ways about it. Okay. And it's going to happen because we've started taking the steps in using space militarily, say only about 4-5 years back, really, honestly. उससे पहले हमारा इतना सोच भी नहीं था. बिल्कुल, बिल्कुल,